हेलो बच्चों, वेलकम टू लुपडेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज एग्जाम बूस्टर्स की लास्ट सीरीज हम लोग ला रहे हैं फॉर यूनिट 4 ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन अकाउंट्स ऑफ बीकॉम 6th सेमेस्टर. Now this series or this exam boosters will be provided to you in PDF form on our app which you can download from Google Play Store. आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एलयू अपडेट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जितना भी एलयू अपडेट का कंटेंट है, लाइक लाइव क्लासेस, नोट्स एंड इंटरेक्टिव सेशंस, आप इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ। साथ ही साथ ये जितने भी हमने एग्ज़ाम बूस्टर्स करा रखे हैं, इन सब का प्रॉपर PDF फॉर्म में कंप्लीट एग्ज़ाम बूस्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे to ace your exam preparations. Along with this, you will have 500 plus MCQ revision questions along with last 5 years previous year question papers. With all this, we can guarantee that you will ace your exams. Just do not forget to like and subscribe and share our YouTube channel, share our videos, download our app and start your exam preparation. तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. So this video will contain your exam boosters for BCOM 6th semester for the subject Income Tax Laws and Accounts, Unit 4. So the very first question is, surcharge on tax on firm's total income is. Now, फर्म की जो टोटल इनकम होती है उस पर जो टैक्स हम पे करते हैं उस पर सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होता है, नॉट एप्लीकेबल या नॉट यानी कि एप्लीकेबल नहीं होता. एप्लीकेबल इफ टोटल इनकम क्रॉसेस 1 करोड़ और एप्लीकेबल इफ देयर इज अ कैपिटल गेन. सो फर्म की टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज का क्या रूल होता है. इज इट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल व्हेन द इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन पॉइंट, और applicable only when there is some kind of capital gain or not. So the correct answer is option A, that is applicable. So surcharge on tax on a firm's total income is applicable. Next question is, income from the asset would be taxable in the hands of the transferor if. Now, कोई भी जो asset होता है उससे जो income होती है वो टैक्सेबल होती है ट्रांसफरर के केस में अगर ऑप्शन ए द टैक्स पेयर ओन्स द एसेट, ऑप्शन बी द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, यानी कि ट्रांसफरर ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है उस एसेट की. ऑप्शन सी द इनकम फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन अंडर अ सेटलमेंट और एन अग्रीमेंट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. सो अगर आपका कोई एसेट है, कोई पर्टिकुलर एसेट है, उससे आप इनकम अर्न करते हैं या उस एसेट से एक इनकम जनरेट हो रही है, बट वो इनकम पे जो टैक्स है उस टैक्स की लायबिलिटी ट्रांसफरर के ऊपर ही जा रही है. ऐसा कैसे केस में होगा कि इनकम जनरेटेड बाय एन एसेट इज टैक्सेबल एंड द लायबिलिटी टू पे द टैक्स goes to the transferor himself. सबसे पहले the taxpayer owns an asset. अगर taxpayer उस asset को own कर रहा है, इस केस में ट्रांसफर के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जाएगी. या ओनरशिप जो है एसेट की ट्रांसफरर ने ट्रांसफर नहीं की है, इस केस में उसके ऊपर लायबिलिटी जाती है. और थर्ड ऑप्शन है कि जो इनकम है एसेट की वो ट्रांसफर की गई किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर सेटलमेंट या अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. ऐसे केस में भी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो ट्रांसफर को जाती है. सो ऑल दीज केसेस आर एप्लीकेबल एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इन तीनों केसेस में ही टैक्स लायबिलिटी ट्रांसफर के ऊपर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल्स ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर्स आर. अब रिवोकेबल ट्रांसफर्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए
if there is an express clause of revocation in the instrument of transfer, यानी आपका जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक प्रॉपर क्लॉज दे रखा है, एक एक्सप्रेस क्लॉज दे रखा है रिवोकेशन के रिगार्डिंग, ऐसे केस में ट्रांसफर्स रिवोकेबल हो सकते हैं. सेक्शन बी, ऑप्शन बी, if there is a sale with a condition of repurchase, यानी जो भी सेल हुई है या जो भी ट्रांसफर हुआ है वो एक कंडीशन के साथ हुआ है कि एट सर्टेन सिनेरियोज दिस थिंग कैन बी repurchased. Option C that we have states if the trustees are empowered in sole discretion to revoke the transfer, यानी ट्रस्टीज के पास ये पावर होती है कि वो ट्रांसफर को रिवोक कर सकते हैं. सो रिवोकेबल ट्रांसफर्स क्या होते हैं या किस केस में होते हैं? सो ऑल दीज ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी, दैट इज express clause of revocation in the instrument of transfer, sale with the condition of repurchase, and trustees are empowered in sole discretion to revoke the transfer. जब ये तीनों या इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अवेलेबल होती है, ऐसे केस में आपके ट्रांसफर्स रिवोकेबल होते हैं. Therefore, the correct answer is option D, that is all of the above. Next question we have is return filed after the due date is called. अब आपको जो रिटर्न आप फाइल करते हो एक पर्टिकुलर डेट पे फाइल करनी होती है. अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट कर देते हैं एंड उस डेट के बाद आप जाके अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे केस में आपका रिटर्न क्या बुलाया जाता है? और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिवाइज्ड रिटर्न, ऑप्शन बी बेस्ट रिटर्न, ऑप्शन सी belated return, and option D defective return. Now you have filed your return after the due date, that is you've been late in filing your return. ऐसे केस में आपके रिटर्न को belated return बुलाया जाता है. So the correct answer is option C, that is belated return. Next question, the sum of various heads of income is called. अब इनकम हेड्स के बारे में आपको पहले बताया गया है. द वेरियस इनकम हेड्स आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो ये सारे जितने इनकम हेड्स होते हैं तो इनका जो सम होता है, इन सभी इनकम हेड्स की जो टोटल इनकम है इन सबको इंक्लूड करके आपकी एक पर्टिकुलर इनकम आती है जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं. तो उस इनकम को हम क्या बुलाते हैं? सर ऑप्शंस आर ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड एडजस्टेबल इनकम. सो द सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि ये जो इनकम आती है इसमें क्या होता है कि आप इससे डिडक्शंस एंड ऑल आपने डिडक्ट नहीं किया है. जब आप इस ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस हटा देते हैं उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आती है. सो द सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम. The next question is, out of which income deduction under section 80C is not allowed? ऐसी कौन सी इनकम है जिसके अंडर आपको 80C के डिडक्शंस अलाउ नहीं होते हैं? Your options are income from salary, income from house property, long-term capital gains, and income from businesses. So among these, the deductions under 80C are not allowed in long-term capital gains. That is option C. आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उसके केस में आपको जो भी इनकम होती है उन इनकम से, यानी इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 80C के डिडक्शंस अलाउ नहीं कराए जाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हेड्स इन अ इनकम टैक्स Act 1961 are. अब income. Moving on to next question. The question says,
The number of heads in the Income Tax Act 1961 are. अब Income Tax Act 1961 के अंडर हेड्स कितने हैं फॉर इनकम, यानी इनकम कितने हेड्स में डिवाइड की गई है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3 हेड्स, ऑप्शन बी 4 हेड्स, ऑप्शन सी 5 heads and option D 6 heads. Now, under Income Tax Act 1961, income has been divided under 5 major heads. Number 1, income from salaries. Number 2, income from house property. Number 3, income from profits and gains of business and profession. Number 4, income from capital gains. And number 5, income from other sources. So these are the 5 main heads or major heads of income under Income Tax Act 1961. So the correct answer is option C, that is 5 heads. Moving on to next question. Out of which income deduction under section 80G is not allowed? यानी वो कौन सी इनकम होती है जिसके अंडर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G अलाउ नहीं किया गया है. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, and option D income from other sources. So, आपका जो 80G होता है उसमें डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं जिसमें कि जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स सेव कर सकता है बाय क्लेमिंग अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, जिसमें आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में कोई चैरिटी या डोनेशन प्रोवाइड किया है. आपका जो डिडक्शन होगा ये 50% टू 100% की रेंज में प्रोवाइड किया जाता है इफ़ यू हैव गिवन डोनेशंस टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. सो कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें 80G के डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होते? और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग the correct income for the question is option D, that is income from other sources. आपकी जो income from other sources होती है उस पे आप 80G के deductions claim नहीं कर सकते हैं. Next question. If the total income is 4,20,194.50, the rounded off income shall be. अगर आपकी एक पर्टिकुलर इनकम दी गई है दैट इज 4,20,194.50, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आपकी इनकम क्या आएगी? सो द करेक्ट आंसर इज और द गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4,20,194, option B 4,20,195, option C 4,20,190, and option D 4,20,200. So the correct answer is option B, that is 4,20,195. Moving on to next question. Which income is rounded off? कौन सी इनकम है जिसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं? So options are option A gross total income, option B total income, option C both A and B, and option D none of these. So आपकी जो gross total income होती है, जो आपकी total income होती है, इन दोनों में ही आपको round off करना होता है. So the correct answer is option C, that is both A and B. Moving on to next question. Due date of filing of return by a non-business assessee is. अब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए जो आपकी ड्यू डेट दी जाती है फॉर ए नॉन बिजनेस असेसी, यानी कि नॉर्मल असेसी के थ्रू, वो कौन सी डेट है? और ऑप्शंस आर 30th जून, ऑप्शन बी 31st of August, ऑप्शन सी 31st July, and option D 30th November. And the correct answer is under the Income Tax Act 1961 is 31st July.
31st July is the date of filing of return by a non-business assessee. This is the due date. So the correct answer is option C, that is 31st July. Moving on to next question. Tax holidays refer to. अब tax holiday क्या होता है? Your option are income tax on holiday income. Option B, cancellation of tax for the entire country. Option C, tax exemption. Option C, tax exemption for a specified period, and option D, none of these. So the correct answer is that what means tax holiday or tax holiday refers to is option C, tax exemption for a specified period. यानी टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराती है. सो दिस इज नोन एज टैक्स हॉलिडे. Next question is the existing maximum marginal rate of tax of an individual assessee is. जो maximum marginal rate of tax आज भी चल रहा है for individual assessee, वो कितना है? Your options are option A 10%, option B 20%, option C 30%, and option D 35%. So the existing maximum marginal rate of tax for an individual assessee is option D, that is 35%. Next, the amount received from URPF is. आप जो URPF से amount receive करते हैं उसका जो amount है वो taxable होता है, exempted होता है, exempted, subjected to certain conditions या none of the above. So the correct answer is option C, exempted but according to certain conditions. कुछ certain conditions को fulfill अगर वो amount करता है तभी जाके the amount received from URPF is exempted. Moving on to next question. Under section 44AB, the audit of accounts is compulsory if the total exceeds. आपका जो section 44AB है उसमें अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग है उसको कंपलसरी किया गया है अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपकी इनकम एक्सीड करती है तो. सो व्हाट इज दैट लिमिट व्हिच शुड बी एक्सीडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स? योर ऑप्शंस आर ₹40 lakh, ऑप्शन बी ₹50 lakh, ऑप्शन सी ₹1 crore, एंड ऑप्शन डी ₹5 crore. So the correct answer is ₹1 crore. जिस दिन आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी उस दिन आपके ऑडिटिंग ऑफ योर अकाउंट्स इज अ कंपल्सरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 44AB of Income Tax Act 1961. Next question, under section 44AB, specified date means. अब specified date क्या है? What is the date specified under section 44AB? Your options are 30th June, 30th of September, 30th of November, and 31st of December. So under section 44AB, specified date means 30th September. That means the correct answer is option B, 30th September. 1994. The rounded off income will be. अब आपकी टोटल इनकम 3,46,994 है. इसको राउंड ऑफ करने पे आपकी इनकम क्या आएगी? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3,46,000, ऑप्शन बी 3,47,000, ऑप्शन सी 3,46,990, एंड ऑप्शन डी 3,50,000. सो व्हेन यू राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट योर इनकम कम्स टू 3,46,000. That is your answer, your rounded off income. So the correct answer is option A. Next question, the income tax payable by an individual is
8562.55. The rounded tax payable will be. अब कोई भी एक इंडिविजुअल है वो 8562.55 एज इनकम टैक्स पे करता है, तो इसका जो राउंडेड ऑफ टैक्स पेबल क्या निकल के आएगा? और ऑप्शंस आर 8562, 8563, 8560 and 8570. So the correct answer is option B, that is 8563. That is the correct answer. Moving on to next question. According to section, TDS shall be payable during the financial year in respect of the total income of the assessee. So the question is asking you the section. In which section will the TDS shall be payable during the financial year in respect of total income of the assessee? Your options are 206, 207, 208 and 210. So according to Income Tax Act 1961, the correct answer is 208. Section 208 of Income Tax Act deals or states that TDS shall be payable during the financial year in respect of the total income of the assessee. So the correct answer is option C, that is 208. Section 208. Next question is, advance tax must be paid according to the. The next question was, there's a bit of misprint here. The next question was, what must be paid according to the provisions of pay as you scheme? यानी कि आपका जो पे एज यू स्कीम का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या पे करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं, टीडीएस पे करते हैं, एडवांस टैक्स या एजुकेशन सेंस. सो द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इज एडवांस टैक्स. Advance tax must be paid according to the provisions of pay as you scheme. Next question. Advance tax is payable when the tax payable by an assessee is dash or more. यानी कि एडवांस टैक्स आप तब पे करते हैं जब टैक्स पेबल बाय एन असेसी इज अ पर्टिकुलर अमाउंट or more than that particular amount. Your options are rupees 5,000, rupees 10,000, rupees 15,000 and rupees 1 lakh. So the correct answer is option B, rupees 10,000. यानी कि 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अगर आपका टैक्स पेबल का अमाउंट है बाय एन एसएससी, ऐसे केस में यू आर एलिजिबल or liable to pay advance tax. That means advance tax is payable when tax payable by an assessee is rupees 10,000 or more. Next question. The non-taxable income for a woman assessee is. अब आपके जो women assessees होते हैं उनकी non-taxable income की क्या लिमिट होती है? So your options are rupees 1 lakh, option B rupees 1,90,000, option C 2,50,000 and option D 3 lakh rupees. So in case of women assessee, the non-taxable income is 1,90,000. अगर किसी women assessee की income 1,90,000 या उससे कम है तो ऐसे केस में उनको टैक्स पे नहीं करना है. This is non-taxable income. So the correct answer is option B. Next question. Any sum received under Key Employee Stock Option Plan, that is ESOP, by the employee shall be. अब किसी एम्प्लॉय को कोई सम रिसीव होता है अंदर की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऐसे केस में उस एम्प्लॉय का क्या ट्रीटमेंट होगा? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, ऑप्शन बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन सी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑप्शन डी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो अगर कोई भी सम रिसीव किया जाता है अंडर की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बाय एन एम्प्लॉय, द सम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एन इंडिविजुअल इज ऑप्शन ए 31st July of the assessment year, option B 30th of September of the assessment year, option C
31st of March of the assessment year, and option D 31st of August of the assessment year. So कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने इनकम रिटर्न फाइल करने चाहता है तो उसकी लास्ट डेट क्या होती है? सो फॉर एन इंडिविजुअल it is option B, that is 30th of September of the assessment year. That is the last date of filing the return of income for an individual under Income Tax Act 1961. The last question, a return filed after the due date is called. This question has already been discussed. Any return filed after the due date is known as option C, that is belated return. So with this, we come to an end of our exam boosters for Income Tax Act and laws, Income Tax laws and accounts. I hope the video was useful. For any updates, any problem, any queries, reach out to our team members. Download our app, subscribe to our channel and share our videos. Thank you.